Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we'll be talking about the courses that's offered in Delhi University. So I'll be telling you all the bachelor's courses that's offered by Delhi University. But ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो कोर्सेज मैं आपको बताऊँ वो हर कॉलेज में अवेलेबल हो, लेकिन ये कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल ज़रूर है. ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में हो या ना हो, but in the university which courses are available, I'm going to talk about that. Also, I'm referring to the information bulletin which is released by the university every year. तो ये जो एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए जो बुलेटिन रिलीज़ किया गया है, आई एम रेफरिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट, लेट मी ओपन इट. ओके, या, सो अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट, फर्स्टली वी हैव द लैंग्वेजेस जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोवाइड की जा रही है. दीज इंक्लूड्स बैचलर्स इन अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश एंड उर्दू. सो दीज आर द लैंग्वेजेस जिसमें आपको बैचलर्स कोर्सेज प्रोवाइड की जा रही है. अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड की जा रही है इन दीज लैंग्वेजेस. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के जो कोर्सेज हैं. सो हियर वी हैव BA ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, then BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, then इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी पत्रकारिता, हिस्ट्री, and we also have BA honors in humanities and social science. Then we have journalism. Then we have 5-year integrated program in journalism, which is offered only in the new one, DSJ, Delhi School of Journalism. Okay. So now we also have BA honors in multimedia and mass communication, and as far as I remember ये केवल IPCW, which is Indraprasth College for Women, इसमें ही प्रोवाइड की जाती है. And then we also have BA honors in philosophy, political science, social work, sociology, and then we have BA programs. I'll be talking about the BA program courses. Also the BA program courses, it includes BA program in computer applications plus economics, computer applications plus geography, computer applications plus mathematics, economics plus food technology, economics plus geography, economics plus history, economics plus mathematics, economics plus philosophy, economics plus political science, economics plus sociology. Then we also have food technology plus history, geography plus history, geography plus mathematics, geography plus political science, Hindi plus geography, Hindi plus history, Hindi plus philosophy, Hindi plus political science, Hindi plus sociology, history plus music, history plus philosophy, history plus political science, history plus sociology. Then we also have music plus political science, philosophy plus political science, Sanskrit plus history, Sanskrit plus music, Sanskrit plus philosophy, and Sanskrit plus political science. So these are some BA program courses that's offered in Delhi University. There are still many BA program courses, लेकिन it's slightly difficult for me to identify all of it. So I'll be adding the information bulletin that I am referring to for your ease, ताकि आप देख सको इसमें जाकर के. एंड ईच कॉलेज का सेग्रीगेशन दिया गया है कि किस कॉलेज में कौन कौन से BA प्रोग्राम के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं. Now for science, mathematics and technology, we have BSc honors in anthropology, biological science, biomedical science, biochemistry, botany, chemistry, computer science, electronics, environmental science, food technology, geology, home science, mathematics, microbiology, physics, polymer science, statistics, zoology, and we also have BTech in information technology and mathematical innovations, which is IT and MI. Then we have BSc programs, which includes BSc program in applied life science, applied physical science and analytical methods in chemistry and biochemistry. Then we also have applied physical science with industrial chemistry. Then we have BSc pass home science. I'm not sure कि ये क्या है, but this is something. And again we have BSc program in life science, then mathematical science. Then we have BSc physical education, health education and sports, BSc which is called BSc PE, HE and S. Then we have BSc program in physical science with chemistry, physical science with electronics, then physical science with computer science,
or informatics practice. Now talking about the commerce and management courses that is offered by Delhi University, it includes BCom honors, then we have BCom, we also have bachelors of business administration in financial investment analysis, which is BBA FIA. Then we have BA honors in business economics, BBE. Then we have bachelors of management studies, BMS. Now talking about the vocational studies, which includes banking operations, healthcare management, retail management and IT, software development, vocational studies. Okay, so now for music, we also have courses for the students who are interested in music. So for them we have BA honors in music, which includes vocal, instrumental, sitar, guitar, violin and santoor. Then we have a BA honors in Hindustani music, and which includes tabla. And then we also have a BA honors in Carnatic music, vocal or instrumental. Then for education, we have bachelors of elementary education, it's a 4-year course. Then fine arts, we have bachelors of fine arts as well. So these were the courses that's offered in Delhi University. Not necessarily कि आपके सारे कॉलेजेस में ये कोर्सेज अवेलेबल हो, बट ये यूनिवर्सिटी के लेवल पे देखो तो ये सारे कोर्सेज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है. एंड प्लस नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, कि इन सारे कोर्सेज़ की फ़ी स्ट्रक्चर क्या होती है. तो देयर इज़ नो फिक्स्ड फ़ी स्ट्रक्चर फॉर दीज कोर्सेज. इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेजेस. कॉलेज मैंने आई हैड चेक्ड द लिस्ट रिलीज बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें द फीस वाज डिस्कस्ड. बट उसमें ये था कि अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग लिस्ट थी कि उनमें जो भी कोर्सेज प्रोवाइड वो कर रहे हैं वो उसकी फ़ीस अलग अलग तरीके से चार्ज करें. फॉर एग्जांपल, वन कॉलेज इज़ ऑफरिंग BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस एट 6,000 रुपीज़ पर ईयर, like for first year, and on the other hand a different college is offering the same course at 15,000 Indian rupees for 1 year. So this is a slight difference which you will see in each and every college of Delhi University. तो आपको ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है कि there is no fixed fee which is taken for a particular course कि अच्छा इस कोर्स के लिए this is the amount you have to pay. Rather it depends कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज में उस कोर्स की फ़ीस क्या है. So on an average I found out that the minimum amount was 6,000 for the BA और BSc courses किसी कॉलेजेस में, and the highest was around 41,000. This is a range जो आपको देखने को मिलता है फीस के स्ट्रक्चर में. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट हियर इज़ दैट कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ओके यू आर फ्रॉम EWS कैटेगरी, यू आर फ्रॉम OBC कैटेगरी, और यू आर फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी लाइक SC ST और PWD और एनी अदर, एक्सक्लूडिंग PWD, आई एम नॉट श्योर ऑफ PWD, बट अगर आप इन सारे कैटेगरीज़ में आते हो तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ कंसेशन कि अच्छा आप इस कैटेगरी में हो तो आपको फ़ीस के लिए कुछ कंसेशन दिया जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. सारी कैटेगरी को एक ही फ़ी, लाइक देयर इज़ वन फिक्स्ड फ़ी, वही आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए देना पड़ता है. अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो भी आपका फ़ीस होता है वही फ़ीस जो है वो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. सो देयर इज़ नो कंसेशन फॉर दैट. So that is it for this video. I hope you all found it informative, and also in the next video I'll be talking about the courses that's offered in LSR, and plus I will also talk about the fee structure of it, and I will also try to find out the cutoffs for each courses that's offered in LSR, ताकि आपको पता लग सके कि if you can get into LSR or not. So yeah.